नमस्कार, सत श्री अकाल, वडक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आज का मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव है, सो प्लीज़ कीप ट्यून्ड, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे एक्सपोज़े करने वाले हैं। देयर आर लॉट ऑफ देयर विल बी सब पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट टू द टॉक इज़ ग्रूमिंग गैंग्स। सभी जानते रहे हैं ग्रूमिंग गैंग्स क्या करता रहा है, कैसे करता रहा है, कैसे अप्रोच किया है उन्होंने यूके में चीज़ों को लेके। सो वी हैव दर्शन नेगी जी, दर्शन नागी जी फ्रॉम यूके. Or Darshan Nagi ji is a businessman. He's an industrialist. He's in one of the very close circles of Rishi Sunak, and at the same time, he's also part of Rishi Sunak's political party. So इसी के साथ शुरू करूंगी सर। दर्शन सर, ये क्या है ग्रूमिंग गैंग एंड व्हाई इज इट इन न्यूज ऑल ऑफ अ सडन? अभी क्यों, क्या हुआ जो बात इतनी बढ़ गई है कि लोग इस पर बात करने के लिए मजबूर हो गए हैं? जी Namaste, Sat Sri Akal. My greetings to everyone. Thank you for having me on your channel. Grooming gangs issue has been in the UK for decades. I would say even if I went back to say 40 years, I wouldn't be wrong. But the reports have recently started coming out, and people. It was first highlighted about 10 years ago, or just over 10 years ago, and what even happened after that, the report came out and everything just went silent. And now a TV channel in the UK has brought this subject again, and I'm glad it has been brought up. Grooming gangs are basically, I don't know whether I should put it very bluntly, and if I do, then I am the one who is taking responsibility for what I'm going to say on this channel. It is predominantly Pakistani men who do this, but then their friends from other communities within that same context of religion also get involved in it. It is I during the Rishi Sunak's election last year, I did question Dominic Raab on this same subject, and asked him that this is going on, and why are we not actually highlighting who these people are, from what community or whatever section of this humanity we come from. But he gave a very roundabout political answer to my question. That the YouTube was there, and I'll put it out on Twitter and on other channels. And everybody within our groups do know what I did ask and the answer that was there. Uh, and I also question that since these people are perpetrators of predominantly white, but I was up to a certain extent a bit wrong. I should have said that girls belonged to the group of human beings who are known as kafirs. जी And दर्शन सर, they, लेट्स प्लीज हिंदी वुड आल्सो बी नाइस। जी सर। ओके सॉरी तो ये लोग जिनको टारगेट करते हैं, जो जिस बच्चियों को टारगेट करते हैं, उनको इस हिसाब से करते हैं कि वो काफिर हैं। और काफिर मतलब के जिनका भगवान में, गॉड में, या उस सुप्रीम में कोई विश्वास नहीं है, या उनको नहीं मानते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि इनको ये सिखाया जाता है कि ये लोग काफिर हैं, और इनको ऐसे आप इस्तेमाल करो कि इनके जहन में आप एक क्या कहते हैं, फियर, डर डाल दो, राइट? कि अगर आप ये हो तो इसलिए आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है, राइट? एंड दिस थिंग आफ्टर इट केम आउट, ये रिपोर्ट आई है, इसमें एक बहुत कंजर्वेटिव फिगर दिया गया है कि there were about 1,400 teenagers that were being used for this grooming. In fact, ये जो फिगर है ये बहुत कंजर्वेटिव है, ये एकदम मिनिमम फिगर बताया गया है. There are even today क्या कहते हैं, things being discussed that there could be up to 100,000 rapes that are happening of these little girls even today.
and it's the same people, it's the same group, it's the same community who is doing it. और वही लोग कर रहे हैं जो यू नो जो ये मतलब हाँ जो ये पहले से करते आए हैं। यू मीन टू से कि ये पहले से होता रहा है, हजारों लड़कियां, सर एक कंजर्वेटिव फिगर दे रहे हैं दर्शन सर की, एक हजारों लड़कियां इसका शिकार हो चुकी हैं, पर अब आवाज उठनी शुरू हो गई है क्योंकि शायद पानी सर के ऊपर जा चुका है। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है दर्शन सर? हाँ, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लड़कियों को, या किस तरीके से इनको ये सर्कल कैसे बनाते हैं लड़कियों के इर्द गिर्द में? ओके, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि मैं ये जो लेबर पार्टी है हमारी यहाँ यूके की, ये काफी इसमें मतलब इनको सपोर्ट करते हैं। जो जो लोग पकड़े गए थे, जिस काउंसिल्स में, जिस एरियाज में वो पकड़े गए थे, वहाँ के जो लीडर्स वगैरह थे, वहाँ के जो लोग काम करने वाले थे, वो प्रिडोमिनेंटली इसी ग्रुप से हैं और या इसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं या इसी कम्युनिटी से हैं। जैसे कि मतलब कहा जाता है, जो रिपोर्ट में कहा गया था कि ये लोग सब मेजॉरिटी पाकिस्तानी लोग ही हैं, राइट। और इनमें अंदर खाते ये चीज डिस्कस की जाती है। अभी इसको कोई हाईलाइट नहीं करेगा या कोई इसको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं होगा कि नहीं 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 ये बहुत अच्छा है, ये ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, राइट। अभी इनमें अगर आप देखो तो जो जो लोग कर रहे थे वो इसी कम्युनिटी में से ही थे, राइट। और जी जब ये पकड़े, अभी बात ये हुई थी कि जब इनको कुछ आई थिंक 5 या 8 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, तो उनने पहले कह दिया कि भाई ये जो ज्यूरी है, ये जो जजेस हैं, ये सब गोरे हैं, इसलिए इसका जो क्या कहते हैं जजमेंट जो आएगी वो रेसिस्ट होगी और सिर्फ हमारे अगेंस्ट होगी, राइट। तो ये लोग ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि इनको डिफेंड कर पाएं और ये इजीली इस चीज से छूट जाएं। और कहीं हद तक यहाँ के जो प्रिडोमिनेंट लोग हैं, जो यहाँ के क्या कहूँ बाशिंदे हैं, राइट, तो वो जब ये बात आती है उससे डर जाते हैं। जी, मैं इसका एक रीज़न बता देती हूँ, लेट मी क्योंकि सर थोड़ा-सा इज़ मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश। यहाँ पे इनका एक पूरा गैंग चलता है। गैंग इस तरीके से चलता है कि आप लड़कियों को आइडेंटिफ़ाई करते हो, लड़कियाँ जो वल्नरेबल फैमिली से हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटी से हैं, गरीब हैं। सिर्फ़ सिख की लड़कियों की बात नहीं चल रही, क्योंकि सिख लड़कियाँ ज़्यादा पकड़ी गई हैं इसमें, पाई गई हैं सॉरी, ज़्यादा शिकार हुई हैं। सिख लड़कियों के अलावा व्हाइट भी हैं, जूस भी हैं, पारसीज़ भी हैं, हिंदूज़ भी हैं। बाकी सारी कम्युनिटी, सिर्फ़ अपनी कम्युनिटी छोड़कर सारी लड़कियाँ हैं। लड़कियों को आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। मस्जिद और इनके जो मदरसाज हैं, वहां पर पूरा बकायदा लड़कों को लाइन से लगाया जाता है कि पहले तू ट्राई कर, वो फेल हो गया तो तू ट्राई कर, वो फेल हो गया तो तू ट्राई कर। मतलब एक एक लाइन से होता है कि सीरीज, जैसे बोलते हैं ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाना लड़कियों के आसपास में, कि ये फेल हो गया तो ये वाला तो पटाई लेगा, ये फेल हो गया तो ये वाला पटाई लेगा। दिस थिंग इज बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम नोवेयर अदर देन देयर ओन एजुकेशनल सेंटर्स। मैं नाम बार बार नहीं लूंगी उन एजुकेशनल सेंटर्स का, मेरे व्यूअर्स काफी स्मार्ट है, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो एक एक ही लड़की के पीछे या 3-4 लड़कियां जो इन्होंने गैंग बना रखा है, क्योंकि ऋषि और मैं दर्शन सर और मैं कल एक उसमें थे ट्विटर स्पेस में, दैट इज वहां पे बहुत सारे लोगों ने, जो वहां के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस मोडस ऑपरेंडी को एक्सपोज किया था। लड़की 3-4 लड़कियां हैं, एक लड़का गया फेल हो गया कोई बात नहीं, दूसरा लड़का गया फेल हो गया कोई बात नहीं, तीसरा लड़का गया फेल हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट को भेजो। जब तक वो लड़की ट्रैप नहीं हो जाती है, कैप्चर नहीं हो जाती है, तब तक ये चलता रहता है। कमिंग टू द मैडम पॉलिटिकल पार्ट। जी देखिए, ये जो बात आपने कही एकदम सही कही। अभी ये लड़कियां वनरेबल कौन है, इसका रिकॉर्ड कहाँ है? इनका रिकॉर्ड हमारी काउंसिल्स के ऑफिसेज में होता है। हर एरिया के काउंसिल के ऑफिस में रिकॉर्ड होगा, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा माँ बाप क्या कर रहे हैं। सो इन काउंसिल्स के अंदर इन लोगों के जो लोग काम करते हैं, इसी कम्युनिटी के लोग जो इन काउंसिल्स के अंदर काम करते हैं, वो ही इनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि फला फला लड़की इस हालत में है, वो आपकी इजी टारगेट हो जाएगी। अभी बच्ची जिसका कि मतलब फैमिली इश्यूज चल रहे हैं घर के अंदर, माँ बाप के, वो घर से फेड अप है कि घर में हमेशा झगड़ा हो रहा है, ये वो हो रहा है, सो शी इज लुकिंग फॉर समबडी टू सपोर्ट हर, एंड ये लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं,
राइट। और इनको इन्फॉर्मेशन देने वाले इन्हीं के कम्युनिटी के वर्कर्स जो काउंसिल्स के अंदर हैं, वही इनको इंफॉर्मेशन देते हैं। सो द होल कम्युनिटी, इनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी ही इसमें इन्वॉल्व है। मैं नहीं कहता हूँ कि 100% है, बट आई विल से 90%। इवन इफ आई वेंट टू से 95%, आई वुडंट बी रॉन्ग, बट ये है। सर आपने बहुत कंजर्वेटिव फिगर दिया है। मैं आपको जो फिगर देने जा रही हूँ वो शायद शॉकिंग लगेगा। लेट मी पुट इट ऑन द स्क्रीन। और ये वहीं के लोगों से आई है। दिस इज नॉट बाय मी और यू, बिकॉज यू नो वेरी वी आर वेरी क्या बोलेंगे, you know, these figures are being put forward by the GP News is a TV channel if I'm not mistaken, जिसने इसके ऊपर एक जी रिसर्च स्टडी किया है। जी एंड उनकी जब कल ये सॉरी उनकी कल जब ये रिपोर्ट आई है तो इससे बोलते हैं तहलका टाइप में मच गया यूके में। तब से इसी पे बात हो रही है सारी जगह पे कि ऐसा हो रहा है। 20,000 विक्टिम्स, 20,000 young girls, underage girls only in 2017-18। सो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये चीज चल रही है, कितना बड़ा कांड चल रहा है। इनकी नाक के नीचे से सारी इनकी बच्चियों को ले जा रहे हैं, बिकॉज द गर्ल्स आर द ओनली वन हु कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन। एंड मैडम, ये अगर अगर आप हम ये कहें कि 20,000 विक्टिम्स का है ना, अगर आप एक विक्टिम का जो बलात्कार हो रहा है या कुछ भी, आप जैसे जैसे भी आप कहो, आई डोंट वांट दिस टू सॉर्ट ऑफ भी शोषण हो रहा है, वो एक एक बच्ची को 10-10 15-15 मर्द इस्तेमाल करते हैं एक एक रात में। इवन इवन जो 10 या 15 मैं कहूंगा वो मतलब बहुत नॉमिनल फिगर है। तो आप इमेजिन करो 20 को, अगर आप 20 के साथ 20,000 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लाख हो गया। तो हर रात 2 लाख रेप होते हैं बच्चियों के यहाँ। ये फिगर्स हैं। ये लोग जो आपने फोटोज दिखाई है, गवर्नमेंट क्यों इनको पकड़ के नहीं निकालती है? इन सबके पास, मैं आपको कह देता हूं आज, राइट, इन सबके पास ड्यूल नेशनलिटी है। ओके जब मैंने डोमिनिक रब को ये क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा था दे आर ब्रिटिश सिटीजन सो वी कांट गेट रिड ऑफ देम, हम उनको नहीं निकाल सकते हैं। इन सबके पास ड्यूल नेशनलिटी है, इनका ब्रिटिश नेशनलिटी कैंसिल कर दो, ठीक है, और पाकिस्तानी जो भी इनका दूसरा नेशनलिटी है उस पे इनको उस देश में वापस भेज दो जहां से ये आए हैं, इंक्लूडिंग देयर फैमिली, वेदर देयर फैमिली, अनलेस यू पुट फियर इनटू देयर माइंड एंड teach them a lesson, they will not learn, they will not you know they, and these are mainly तो jihadis. दर्शन से ये समथिंग इज लाइक जैसे इंडिया में होता है लव और JIHAD, इट इज समथिंग लाइक दैट। हाँ, जो भारत में हम सब देख रहे हैं रोज लड़कियां सूट केसेस में आ रही हैं, उसी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। बट यहाँ पर क्या सूट केस में भेजेंगे तो पिटेंगे अगले दिन। वैसे भी अभी आई जस्ट शो वन वीडियो व्हिच इज वेरी प्रोवोकेटिव। आयरलैंड में आई थिंक आज से 4-5 दिन पहले एक बहुत बड़ी रैली हुई है जहां पर एक 15 साल की बच्ची के साथ टीजिंग किया गया था। तो एंटायर कम्युनिटी रिबेल्ड एंड रिवोल्टेड एंड दे से वी डोंट वांट दीस माइग्रेंट्स, we don't want these people। I mean, the language is very very slang kind of a language, मैं वो नहीं यूज करूंगी। बट उन्होंने सीधे सीधे आयरलैंड के लोगों ने, युवाओं ने, they were at least in thousands who came on the streets protesting। गवर्नमेंट को पता नहीं है क्या? क्या गायत्री गवर्नमेंट जी, की गायत्री जी, द गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग। Okay, be it labor, be it conservative, every politician in this country, हर politician को ये चीज पता है क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, सब डरते हैं इनसे। मुझे पता नहीं क्यों ये डरते हैं। आई वुड लव टू सी दैट। एंड मैं एक चीज अभी कल जब आप ट्विटर पे, आप तो आई थिंक उससे हट गए थे उस डिबेट से, उसके बाद मैंने एक वेल्स से एक हमारे साथ एक आदमी जुड़ा हुआ था, उसको मैंने सपोर्ट किया, उसको कहा है कि भाई आप बताओ आपको कब हमारी सपोर्ट चाहिए, हम आपको फुल सपोर्ट देंगे, राइट। इस चीज में अगर आपको इसको फाइट करना है, हम आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ के जो अंग्रेज लोग हैं उनको खड़े होने की, द वाइट मैन, द वाइट पीपल, वाइट मदर्स हैव गॉट टू वेक अप एंड से इनफ इज इनफ। अंटिल दे डू, वी आर ओनली 1%। Out of 1%, you will get about 100-150 people who will come out to support. Yeah, but the rest of the 80%, 85% of the public is white, predominantly British white people. Unless they come on the streets, they go and question their politician and say, excuse me, you have to put a stop to this. If you don't, you are not going to stand in the next election, right? Until we use that force, right, these people will not learn. Gordon Brown government,
उस वक्त मतलब वो सर्कुलेट इन्वेस्टिगेटिंग ग्रूमिंग गैंग्स 2008 में जो किया था, राइट? दे नो, they all know it, but nobody wants to open their mouth. Why not? What is the fear? What is wrong with these people? Why do we elect these people and put them in place when they are not going to stand up for us? अगर हमारा पॉलिटिशियन हमारे लिए खड़े नहीं होते हैं तो हमें इनकी जरूरत नहीं है. We don't need them. Be it whoever, I don't care. I don't care about your party at the moment. I know majority of these people are with the Labour Party and they're being supported. Keir Starmer to keep his mouth shut and now come out. He did not say anything when I was director of public prosecution. He was being paid to prosecute these people. Why did he let them down? What stopped him from putting these people on the stand and putting them behind bars and deporting them, getting them deported? He's a lawyer. He should be putting laws into place where we can live safely in this country without having to face these idiots. I'm sorry, my language, but I am furious and I'm sure there are thousands. अब मैं आपको एक केस बताता हूँ जो कि रिपोर्ट में जो बताया गया था. एक फादर को पता चला कि उसकी बेटी कुछ 15 मर्दों के साथ है किसी फ्लैट में. वो उसको छुड़ाने गया. जब छुड़ाने गया तो उसको पुलिस ने रोक दिया कि आप मत जाओ, आपके मतलब बच्ची को खतरा हो सकता है, राइट? तो अगर ये चीजें हमारी पुलिस ही ऐसे करती है जो कि हमें डिफेंड करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो हाउ कैन वी फील सेफ? मतलब बच्ची इस बुरी हालात में है और पेरेंट्स नहीं जा सकते हैं क्योंकि बच्ची की तो जान को खतरा है ही है, पेरेंट्स की भी जान को खतरा है. जी. अभी एक और केस बताता हूँ इसी में जो आया था, रिपोर्ट में आया था. एक एक लड़की फेडअप हो गई. उसका हर रोज 15-20 लोग उसको इस्तेमाल करते थे, हर रोज उसको, राइट? तो फेडअप होगी, उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया. ऑर्गेनाइजेशन वाले उस बच्ची को पुलिस स्टेशन में लेके गए, राइट? वो आदमी या औरत उस बच्ची को पुलिस स्टेशन लेके गया. जब वो बच्ची पुलिस स्टेशन में पहुंची, उसी टाइम उस बच्ची के मोबाइल पे मैसेज आ गया कि तेरी 11 साल की बहन हमारे हाथ में है, तेरे भाई की टांगे हमने तोड़ दी थी, अभी तू देख ले कि तेरा क्या हशर होगा, तेरी बहन का क्या हशर होगा. तो उस बच्ची ने अपना स्टेटमेंट देने से विड्रॉ कर लिया. ये हालत है ब्रिटेन में. Shame on our British politicians, shame on our services that are supposed to protect us. This is disgraceful, absolutely shattering, as completely shameless people who we elect and we put them in place in authority. Is it only about, because now since we are talking about politics, is it only about Labour Party, or it is also Conservative Party is also afraid to take the things into motion? Madam, Labour Party, majority of these people are part of the Labour Party. I mean, let's take that guy. What was his name? Jahangir. Yeah, he was one of those culprits who was doing this. He was later elected as leader of the council, or was it deputy leader of the council? The person who was committing these crimes is being elected to be the leader of that area in the local authority. Who was he? He was in the Labour Party. And only after the report came out, they asked him to step down. They did not take any action against him. He should have been put behind bars. His family, his daughters should know what their father is doing. And unless you do that, it will not stop. And this I hold all parties. Although Labour Party is at the head of it, on the top of it, and then on the top of the list. But I will hold every politician equally responsible. Yeah. I know a friend of mine, after I questioned Dominic Raab, he also questioned Rishi Sunak about the same grooming gang issue. And Rishi ji very nicely said, that he is worried that he has got 2 daughters and he's concerned about what is going on. But unless his party 100% behind him will support him, well, there are too many do-gooders. These white men have become do-gooders. We are, the world's only people who know what is right, what is human rights. They don't give a damn. They don't give a shit about their own people, what's going to happen.
what is happening to their little children? None of them. It is disgraceful. I am shocked beyond words. I'm shocked beyond words, and I actually am thinking about the girls. और तकरीबन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, इसमें से 99% जो बच्चे हैं, दे आर ऑल अंडर एज, innocent girls from maybe broken families, from poor background, or maybe vulnerable teenagers में वैसे भी बच्चे हैं, बहुत मासूम सी होती हैं, उन्हें पता नहीं होता है, एक प्रिंस चार्मिंग की वेट कर रही होती हैं, एंड इट इज, आप ये सोचिए आपके घर का कोई बच्चा है जो 12-13 साल का बच्चा है, उसके साथ ऐसा कुछ होगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? हाउ वुड यू रिएक्ट? This is, I mean, your parents can't even go and save you if you're caught into such something of this kind. You can't. Your It- parents can't save you once you're into that trap, into that masjid, or into that madrasa, or into that maybe any fucking place. Sorry, into any place where they take you. आप उसके beyond जा नहीं सकते. yeah, आप helpless हैं. वो टेकन अवे मूवी है, जो टेकन है, जो मूवी है, वो तो फिर भी आई थिंक विल बी रादर व्हाट डू यू से, मे बी बहुत हल्की मूवी है फ्रॉम व्हाट दर्शन जी इज डिस्क्राइबिंग. yeah. बहुत What हल्की है वो. it's happening now. Let me tell you another place that is happening. That's in universities in this country, colleges in this country. These people they go out and put out leaflets and books and everything regarding their religion. Okay, and then they lure these people to our children, or predominantly white children as well, right, to come and read them and join them and show how peaceful we are and how loving we are and how caring we are. This is how they lure them. I'll give you a very small example. Gayatri, I just remembered last year a childhood friend of mine sends me a message on Facebook and says, Darshan ji, I need some kadas. कड़ा पहनते हैं ना हाथ में सिख. तो मैंने उसको पूछा भाई आपको कड़ा क्या कहना? ओ मेरे कुछ दोस्त हैं उनको चाहिए. वो बोला देख सीधी बात बताता हूँ तेरे को, मैं बताता हूँ तेरे को कड़ा क्यों चाहिए. ये लोग इनके लड़के कड़ा पहन के घूमते हैं. इट इज एन आइडेंटिटी टू शो दैट आई एम अ सिख. बाल कटे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने यहाँ बाल कटवाए, मेरे खुद के बच्चों ने बाल कटे हैं, राइट. ये कड़ा एक फर्स्ट साइन दिखाते हैं कि मैं सिख हूं. बताते नहीं है कि हम मुसलमान हैं या हम इस धर्म से हैं, वो हैं, ये है, राइट. फिर उनको अपना झूठा नाम बताते हैं और ऐसे लड़कियों को फंसाते हैं. हमारी जो सिख लड़कियां, जो हिंदू लड़कियां जो फंसती हैं इनके साथ, वो इस पॉइंट पे बस फंसती हैं. कड़ा पहन के जाके दिखाते हैं कि मैं तो सिख हूं, अपना राम कुछ भी नाम बता दिया, एंड दे लूर देम, and they our innocent girls fall for it, and they only find out afterwards. बाद में पता चलता है जब सब कुछ हो गया. फिर वो कहता है भाई तू तो ठीक है, मेरी तो ऑलरेडी बीवी है, मेरे ऑलरेडी बच्चे हैं, ये है वो है, सब कुछ है. But it starts in the universities. Girls are lured, and children uh, are क्या कहते हैं, converted at that point. And it has got to, unless the British authorities stop letting this happen. Although a lot of our children are now quite aware of what is going on, और उन सबको ये मतलब ये चीज है कि पता चल रहा है. गुरुद्वारा में बहुत से मतलब ये लेक्चर अभी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि इस चीज से आप बच के रहो, और ये इसकी बहुत सख्त जरूरत है. Sir, Darshan sir, I'm really sorry if I outburst. I'm just trying to contain because being a girl, this is a very sensitive topic. Boys के साथ भी तो हो रहा है. I will not use the word. I'll spell it out. My viewers are smart. I'll use the word. इनकी कम्युनिटी में तो लड़कों को यूज करते हैं. आप इनके सॉरी, मैं आई डोंट नो, आई एम गोइंग टू ब्लंटली से, पाकिस्तान में तो ये लड़कों को क्या इनका नाम दिया जाता है, बच्चाबाजी. और ये वही चीज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं यूके में, पूरे जी. यूरोप में. They're doing it everywhere. they सबसे बड़ी बात तो ये है, आई वाज लिसनिंग टू यूट्यूब, एंड उसमें
नॉट एक नहीं, बहुत से अभी यूट्यूब्स आ रहे हैं जहां के पाकिस्तान के बच्चे यंगस्टर्स कह रहे हैं कि हमें बचपन से 3 4 5 साल की उम्र से स्कूलों में, घर में ये चीज बताया जाता है कि ये लोग जो हैं ये काफिर हैं। आपने इनको हेलो भी नहीं करना है, आपने इनको नमस्ते नहीं करना है, सत श्री अकाल नहीं बोलना है, आपने इनके साथ दोस्ती भी नहीं करनी है, ये हमारे दुश्मन हैं। इनको वहां रखो जहां इनकी कोई भी इज्जत ना हो। ये चीज सिखाई जाती है इनके स्कूलों में, इनके मदरसों में, इनके घरों में। दे आर बीइंग टॉट दीस थिंग्स इन देयर होम्स। गायत्री, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल और बताऊं। मुझे नहीं पता था, एक बच्ची आती थी इंडिया से। बच्ची मतलब मेरे लिए तो बच्ची है, आई एम अ ग्रैंडफादर, यू नो। और वो बाबा के भजन वगैरह गाती थी, क्या कहते हैं, माता की भेंटें वगैरह गाती थी। तो उसी के ग्रुप में कोई लड़का था, वो तबला वगैरह बजाता था, ये वो करते करते उसके साथ वो हो गया, प्रेम हो गया। तो 2 साल 3 साल पहले, ये लॉकडाउन से पहले मैं इंडिया गया था, तो वहाँ मेरे को मिली, तो घर गया। तो मैंने ये नोटिस भी नहीं किया कि जिस लड़के से उसने शादी की थी वो मुसलमान था। आई डिड नॉट नोटिस इट। उसने ना मेरे को अच्छी तरह से उसका नाम बताया, ना कुछ। बाद में पता चला कि उस बच्ची को मर गई। उसके माँ-बाप पीट रहे हैं कि उसको उसको मार दिया गया है, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ ये कर आती थी, पापा मेरे को इतने हज़ार चाहिए, पापा मेरे को ये चाहिए, मम्मी मेरे को ये चीज़ चाहिए। वो उनसे ये सब करवाते थे, राइट? ये चीज़ होती है। They they lure these girls, they produce children, and then they get rid of them. अरे आपको एक बहुत बड़ी रैकेट बताता हूँ यहाँ। I know this is slightly off the topic of grooming gangs. Yeah? यहाँ क्या होता है, ये लोग यहाँ आते हैं, शादी की है, 4 5 बच्चे बना दिए, और ऑन पेपर कह दिया कि भाई मैं इस औरत को डिवोर्स कर रहा हूँ। ठीक है? एंड देन द मैन गोज बैक टू पाकिस्तान, मैरीज अ यंग गर्ल, ब्रिंग्स हर हियर। वो जो घर है, सब कुछ है, उस औरत को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल गया है। एंड देन दे गो एंड मैरी अ यंग गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान, ब्रिंग हर बैक एंड प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। दिस इज व्हाट दे डू। एंड एवरीबॉडी नोज, द गवर्नमेंट नोज इट्स हैपनिंग। अगर अगर वो दूसरी शादी नहीं भी करते हैं तो दूसरा घर ले लेते हैं सरकार से, एंड देन दे बैक विद द फर्स्ट वाइफ। रात को, जी मैं तो सिर्फ अपने बच्चों को मिलने आया था इसलिए वापस आया हूँ, राइट? एंड दूसरा घर जो होता है वो किराए पे दे देते हैं, वहां से इनकम आ रही है। देयर इज अनदर रैकेट। दे प्रोड्यूस चिल्ड्रन, एंड देन लड़की कह देती है, यार आई कांट अफोर्ड टू कीप दिस चाइल्ड, आई यू नो आई एम टू डिप्रेस्ड, दिस दैट एंड द अदर, एंड दे गिव दैट चाइल्ड फॉर अडॉप्शन। एंड वो अडॉप्ट कौन करता है उस बच्चे को? उसकी दादी या उसकी नानी। उस बच्चे की दादी या नानी, या उस लड़की का सास, या उसकी अपनी माँ, राइट? वो अडॉप्ट करती है, उनको पूरा बेनिफिट मिलता है टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, एंड इट्स समथिंग लाइक 400-500 pounds a week बेनिफिट। एंड वो उसी घर में फिर रहते हैं, साथ ही रह रहे हैं। वो बच्चा उसी घर में अपनी माँ के पास ही होता है, बट ऑन पेपर इज इनको ऐसे फंडिंग हो रही है अभी। आपको आई सी यू लुक स्ट्रेस, गायत्री। लेट मी टेल यू समथिंग दैट हैज कम अप। लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए यहाँ, हमारी काउंसिलर हैरो, वहां पार्टी चेंज हो गई, कंजर्वेटिव पार्टी आ गई। दे फाउंड 5 Muslim organizations who were only on paper. The organizations didn't even exist, and they were taking all the fundings from the council. This is how they are funding their community and their projects. This is how these people who are in the grooming gangs are paid. This is where they get their monies from. Yeah, I get it now. I get it. It's happening everywhere. What I'm worried about is about the kids. छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एंड उन बच्चों को इस तरीके से टारगेट करना, आइडेंटिफाई करना, राक्षस भी नहीं करता है, डायन भी कहा जाता है। मैं बहुत हार्श वर्ड्स में बोल रही हूँ, डायन भी 7 घर छोड़ देती है। जी 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 जी। गायत्री जी, डायन आपको एक चीज और मेरे माइंड में आई थी। God, I've missed it. Something came up. Sorry, you carry on. I'll if it Okay. comes back, I'll Let come back. me हाँ, the boys are not safe. Underage cute boys are not safe because उनके साथ SODOMY हाँ, किया जाता या है। जी जी। Now girls अच्छा, are not safe.
all of them coming from only one community, all of them coming from one country. God forbid ये कीड़े ओके ओके आपके जेल्स की सिचुएशन क्या है जब इनको पकड़ा जाए, अगर इन लोगों को टारगेट देखिए मतलब अगर देखिए the Pakistani community, they are say the whole of Muslim community is 3%, I think, in the UK. I think so. Yeah. If I'm wrong, please, I stand corrected. But their population in the prisons is more than 19%, 20%. Indians are 1%, and their population in the prisons is less than 1%. Okay. आपको एक छोटी सी बात बताऊं, and I think the British people need to go and read Bhagavad Gita, or should I say, not Bhagavad, but Mahabharat. In Mahabharat, Draupadi Haran happened, and everybody, I wanted to learn why people like Dronacharya and the most learned people and Bhishama Putra, Ganga Putra Bhishama, sat there quietly. They sat there because they had given their word to the king to say, we will always stand by you. And this is what the white community is doing in Britain and in Europe, in America, in Australia, in New Zealand, in all these so-called white countries. They're giving their word to these people that we will do human rights and we will not touch you. But if that Draupadi Haran happened and those people watched it, then Draupadi Haran will happen in every home in these countries, in every European home, and it will happen in front of their parents. It will happen in every street if these people don't wake up today. This is a challenge to anyone who wants to listen. Go and read Mahabharat and see what Draupadi Haran is and what is going to happen. Because you give your word to these people and you keep quiet, they will come for you. It's like having a snake. I think we have spoken about snakes before, and it has been discussed on various other platforms as well. You are letting these snakes in, and you are feeding them. They have been given every benefit. These people who are the perpetrators, these criminals who were part of the grooming gangs, were being paid millions of pounds. Their solicitors were being paid millions of pounds, to defend them. Yeah. It is Europe is now opened its doors to Turkey and Syria because of the earthquake. Now, this is happening in France, this is happening in Ireland, this is happening in Sweden, this is happening in Germany, this is happening in UK, this is happening in Holland, this is happening in Netherlands, this is happening in the other far right. Gayatri, Switzerland has become the rape center of the world. The entire Europe is reeling under this thing. This is a video. I'm going to put it on this is a proper video where he's speaking in French language. What is coming to Europe? Immigrants openly in Paris, openly. Yeah. In Paris, threatened, saying we are here to stay and we are going to dash all the white women of Europe and dash all the men. We captured Europe and it's ours now. Yes. क्या चूड़ियां पहन के बैठे वहां के white लोग? I am being blunt. Why can't people see through it? And the shame on the politicians of all these countries, क्योंकि इनके मुंह पे पैसा मारा जाता है. और वो पैसा कहाँ से आता है? Darshan sir, I think it's better you shed the light because my tone becomes harsh, really harsh. No. The money is coming from halal food. That is a very big funding. Every supermarket is now selling halal food. I was surprised to see a bread, and they quietly have a halal logo on the back. That means that bread producing company is paying commission to halal for just having their logo. It's nothing else. Yeah, halal. And as I said before, they are in the councils. They are siphoning out money from the councils. They are in the government organizations where they are siphoning out money for their own so-called organizations. And these white men are paying them blindly, are handing over all this money to them blindly. The thing is, they have very large network of lobbying the parliament and lobbying the politicians in this country. And the politicians are blindly, letting
letting it go. They are poor. They are, feeling sorry for them. And it's not. पुअर It's not. प्रोड्यूसिंग 12 बच्चे पैदा करने के बाद पुअर तो कोई भी हो जाएगा. And they don't want to work. They know. And these people, there are thousands, hundreds of thousands of people, British people sleeping on the streets. Okay? The British white people, politicians will not give them homes, will not give them anything. They sleep on the streets. While these people come from abroad. Darshan sir, I want to show something. Yeah. This video that I'm going to show is from Dublin. Sorry, let me just fix it right. This is from, isko kaise karte hain full screen? I don't know, but okay. Okay, I can see. It's okay. Carry on. Sorry. Okay, let me just play it. That's I can see the people there protesting. This is Dublin, okay? And these are people who have been brought in Dublin. And ये पूरे जितने आपको पीछे दिख रहे हैं सारा का सारा एक ही समुदाय है, शांति प्रिय समुदाय. Yeah. They have been brought in buses in Dublin. They are going to be settled there. Imagine क्या होगा उस देश का. Yeah. This is how many kilometers? Let me just get the text also with this. I would request people to, if you really want really quick updates, this is a channel, Telegram channel called Make Updates. Most of the times their content is awesome, so you can just join it on Telegram, and it's easy to get instant updates from all the different angles. Now, let me tell you another thing that is happening here in the UK. Anybody who is a criminal in any of their countries, right? They run away from there and they come to the UK or they come into Europe, right? And they get to live in this country on the basis of human rights. That if I stay in the country where I was, I will be killed. They will, do that to me. Yeah. तन सर से क्या कहते तन सर से जुदा. Yeah. वो हो जाएगा वहाँ. Okay. So they come here on the basis of the human right. This country gives them the right to live here, pays them, gives them a home, gives them constant money. And then these same people stand up and say, you people are kafir, right? Therefore, you have to obey to what we tell you and live by our rules. Yeah. The video जो अभी मैंने वीडियो दिखाया ये उसी वीडियो के साथ था. ये Middle East, Africa, flown into the Dublin airport where coaches await to take them to hotels despite 97 nationwide. 97 nationwide. This is in Ireland. I'm not talking about any other country. Ireland में सिर्फ 97 nationwide anti-migration demonstrations being held. The government keeps ignoring the wishes of the Irish people. Do they pick up arms and then they will listen? Or they want a bloodbath? Because these politicians, their mouths are I'll tell you, Gayatri ji, somebody who belonged to one of these right-wing parties in UK, that we were having a discussion, and it was only on WhatsApp or something like that, right? And he said that bloodbath will happen in this country. If the white politicians don't wake up today, they are heading for bloodbath. There will be civil war. And if that is what they want, that's fine. I think they're letting it. Don't repeat the word BLOO. You understand, yeah, right? Sorry. Yeah. It's okay. Once in a while is okay, but no. Yeah. No. But my blood boils that these politicians are keeping quiet and they know what is coming. They know what is going to happen. They can see it, but yet they will not wake up and stand up and say enough is enough. And until they do it, until what is happening in Dublin now, protests, until this happens here as well in London, yeah, and kick these politicians out. It's very simple. Go to your MP and say, in the next elections, you're not going to stand. It is simple as that. If you're not going to defend us, you're not going to stand. But they have become two chickens. No, human rights. They are humans as well. Hey, listen, they're calling you kafirs. They don't care who you are. They will eat you. They will smash you. They will crush you. They will crush you. The grooming gangs is only a small beginning.
As I said, Draupadi Haran will happen in every home in this country, in Europe, in America, in Australia, in New Zealand, if you don't put an end to it now. Okay, so this is one angle. Now coming, I know this is going to get a little extended and I would like my viewers to please like, subscribe and share the button. और अगर आप मुझे support करना चाहते हैं तो आप support भी कर सकते हैं. सभी links scroll down भी हो रहे हैं और description box में भी हैं. Coming to the next angle, आपने बात किया, हमने जो अभी तक बात किया मैं उसको एक छोटी सी summary कर दूंगी. Thousands of people coming from different parts of the world, especially from one community, mainly from Pakistan. There can be other countries like Syria, Lebanon and Somalia. इनका एक ही टारगेट है, इनकी बच्चियों को, गोरी बच्चियों को, थोड़ा टारगेट ज्यादा रहता है, थोड़ी गोरी बच्चियों को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, ज्यूज हो, उन बच्चियों को अपने जाल में फंसाने का मोडस ऑपरेंडी बता दिया है. कहाँ से ऑपरेट होता है मदरसा मस्जिद, वहां से बता दिया है. नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल रूट. व्हाई इज द लीगल रूट नॉट हैपनिंग? दर्शन सर, लीगल रूट में क्या प्रॉब्लम है अगर ये लोग लेके जाते हैं कोर्ट में केसेस को? They cry out, it is Islamophobia. They use that word. It's a word that has been invented, and then it is the own British legal system that protects them, that gives them legal aid, gives them millions of pounds, and then who is defending them? It is their own solicitor from their own community. They get the money, and that money goes back into the circle of Hawala and on promoting what they are doing. So the money goes back. What happens, the local people, if anybody stands up against these people, they're shut down. The legal cases happen against them, so people back down. And this is what is happening. So the local people fear that if I open my mouth, I will lose everything that I have, or I will suffer, or I'll be put behind bars. So it is the law in this country. These people sitting with in the House of Lords don't do nothing for their community. Disgraceful. All the lords that sit there. Now, okay. So since we have had एक ढांचा बन गया है, अब बात करते हैं एक दूसरे एंगल पे. पॉलिटिशियंस को पता था, अभी से नहीं पता, लंबे टाइम से पता था, अभी भी पता है. अभी मैंने जब लेबर पार्टी का दिखाया कि उन्होंने सारी रिपोर्ट्स हश हश करने की कोशिश की, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जीबी न्यूज चैनल ने इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई और इस वक्त यूके में ये हॉट टॉपिक हो गया है. GB News is set up by a guy. What's his name? Sorry, I'm terrible with names. He was part, I think he was part of the UKIP party. He was a leader of the UKIP party. Okay, he is anti-immigrant. He is anti-immigration. He is shouting on the top of his voice. He is the one who also instigated Britain coming out of Europe. I need to remember his name. Anyway, right? He owns GB News. He is trying to highlight what these people are doing, what these people coming into this country from this community are doing to our little white girls, or little little kafir girls, right? And I think he's taken a very good stand. I think he's taken a very good angle to highlight this point. Where so far, whenever he is telling this government to stop this immigration, nobody's listening to him. Oh, no, it's human rights. It is not human rights. You are letting snakes in. Simple. Full stop. Right? He is shouting on the top. He has actually shown how the British naval ships or British ships go across the channel, right? And people are brought in from the other side by the French Navy and handed over to these people, and they bring them here, put them in 5-star hotels. Disgusting. And the entire expense is borne by the UK citizens, right? That's right. Yes. Yeah. We the taxpayer are suffering. Not from the Pakistani community. Hey, they don't pay any taxes. They're all on benefits. They don't. How 90% of them don't work, or any work that they do is all cash in hands, and they very well know that. I got hold of a very very small clipping that the GB News has made. I would request everybody. मुझे पता है इंग्लिश में है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं हिंदी में लेके आऊँ, बट बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जिनका कंटेंट इतना अच्छा है कि वो हिंदी में फ्लो उनका टूट जाता है.
वो हिंदी में वो बोल नहीं पाते हैं. सो प्लीज फोकस ऑन द कंटेंट रादर देन लैंग्वेज. अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो आप सब टाइटल्स ऑन कर लीजिए प्लीज. बट मैं फ्लो नहीं तोड़ना चाहती हूँ. मैं पहले भी कई गेस्ट, बहुत अच्छे गेस्ट मैंने छोड़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदी इंग्लिश सिनेरियो. ये जो जीबी न्यूज की जो क्लिप है मैंने अभी चलाई, अभी स्क्रीन पर शेयर की हुई है, मैं इसको थोड़ा सा चला रही हूँ. प्लीज जाकर देखिए किस तरीके से 11 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ है. ये डॉक्यूमेंट्री उसी के ऊपर है. Said to me in meetings such as these children were consenting, they were making informed choices, they were returning to their abusers. I never left the building, the flat. Yeah, very chaotic for a 14-year-old. I can't tell you how many rapes that I've had. Despite the known links between rapists, South Yorkshire Police failed to act. Every time anybody new came into a senior role, Copyright issues, I won't run the whole of it, so please go and watch this. It's important क्योंकि ये जो यूके में हो रहा है हम तो झेल ही रहे थे पहले से. बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आया है, हम तो झेल ही रहे थे. वो जो लड़कियां हमारी बच्चियां हमारी सूटकेस में आ रही हैं वो वही तो है. उसी का एक उसका माइल्ड वर्जन है ये लिटिल बिट. दर्शन सर, ये उसी का माइल्ड वर्जन है क्योंकि हमारे यहाँ तो सीधे वो भैया ले गए, काट दिया, सूटकेस में पैक कर दिया और फेंक दिया कहीं पे भी. यहाँ भी तो एक केस हुआ था. एक लड़की को मार के नदी में फेंक दिया था. And they said this is honor killing. If you stand against us, or if you क्या कहते हैं, try to get at us, this is what will happen to your girls. This is what we'll do to them. They put that fear into everywhere. वहां तो वैसे करते हैं ना कि भाई वहां उनको वो चीज नहीं है. यहाँ तो fear डाल रहे हैं लोगों में. They're putting fear into people's minds कि भाई अगर आप हमारे साथ ये करोगे हम बच्चियों के साथ ये कर सकते हैं. उसको मार के कहीं भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं और आपके सामने करेंगे. और सामने किया, नदी में डाल दिया, छुपाया भी नहीं. Right? This is what they're being taught. This is what they're being preached in their centers. Right? And nobody wants to do anything about it. Disgusting. शर्म की बात है. Absolutely. British politicians बेशर्म है. जी. इससे आगे क्या कहूँ. दर्शन सर, इसका सोल्यूशन क्या है? बिकॉज मुझे तो इसमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं. ही इज द वन. ही अच्छा दर्शन सर, there's somebody commented, did you mean Nigel Farage? Yes, absolutely. That's him, Nigel Farage. Thank you, Sharma ji. Now, what I'm talking about is, how can this be controlled? Do you think Rishi Sunak ko aake, I know it is a far-fetched thing that I'm talking, but he should take tips from a lot of. The only way to control it is if there is 100%, not a single person in the British Parliament standing against this law. Right? Everybody support this law. Bring these people, perpetrators, इनको पकड़ के पूरी फैमिली की फैमिली, बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं नहीं हुए हैं, सबके सबको पैकअप करो, ब्रिटिश सिटीजनशिप कैंसिल करो और इनको वापस भेजो. Cancel their British citizenship and send them back to wherever they have come from. It does not matter. साजिद जावेद ने किया था ना, वो लड़की जो यहाँ से 15 साल की लड़की गई थी, सीरिया गई थी, ब्राइड बन के, राइट? IS की वो ब्राइड बन के गई थी, अभी रो रही है ना. और यही लेबर पार्टी अभी उसको वापस लेके आना चाहते हैं. उसको कह रहे हैं नहीं वो बच्ची थी, 15 साल की थी, ये थी वो थी. यहाँ 15 साल की बच्चियों के साथ ये जो कुछ हो रहा है ये इनको नजर नहीं आता है. वो बेचारी है, ये बेचारी नहीं है. अरे ये कहाँ का कानून है? What is this Labour Muslim Council 34 who shared images? Yeah, उसी ये उनको कुछ नहीं कहते हैं. ये जो कुछ करते हैं वो माफ है. हम जो करते हैं वो मतलब वो पाप है. ये जो कहते हैं कि गजवाए हिंद बनेगा, ये गजवाए यूरोप बना रहे हैं अभी. White man, wake up. White man, wake up. The politicians. Okay, there is one point maybe Darshan sir missed it because it was discussed yesterday. Now that main point is politicians इन्हें support क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हलाल की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि 2 से 3 कॉन्टिनेंट्स आज के डेट में खड़े खरीद सकते हैं.
अफ्रीका तो यूं हाथों हाथ यूं अफ्रीका तो गया है। दैट इज द काइंड ऑफ हलाल इकोनॉमीज। आप जो हलाल प्रोडक्ट ले रहे हो, every bit, every piece is contributing to this. This Yes. money is funnelized and it is being sent to these politicians. Elections के टाइम पे ये जैसे भारत में होता है, they vote in blocks. Voting power, muscle power इनके पास आ गई। Politicians को पूरे campaign के लिए, oh please take this donation, industrialist, businessmen, philanthropist, ये लोग सब उन चीजों के नाम पर इनको पैसा देते हैं और इनका मुंह पे टेप चिपका देते हैं। लेट मी टेल यू, भी मैंने स्पेस में कहा था, अफ्रीका विल बी द फर्स्ट कॉन्टिनेंट टू बी इस्लामिफाइड, फर्स्ट कॉन्टिनेंट, क्योंकि यहाँ I think you said 100 years. I will give it 25 years. In next 25 years. मेरा एक थोड़ा वाइडर वो था, जब मैंने इस पे कल डिस्कशन किया आपके साथ, 100 years हमने एक ट्विटर स्पेस किया था। 100 years, आप सही बात है, 100 years नहीं, ये 50 years तो मैक्स। हाँ, 20-25 years maximum. That continent is gone. Yeah, देखिए Nigeria, Ghana में they are already taking over and nobody is saying anything. मैं एक चीज से यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, आप 1900 का मैप उठा के देख लीजिए, जस्ट टाइप 1900 रिलीजियस मैप ऑफ द वर्ल्ड, आप देखेंगे कि सिर्फ पूरा अरेबियन पेनिनसुला था। उसके बाद आप देखिए 2000 का मैप, देख 2000 ईयर का मैप, सोमालिया गॉन, नाइजीरिया गॉन, अल्जीरिया गॉन, कॉन्गो गॉन, आपका कीनिया, आपको पता ही चल रहा है क्या हो रहा है। देन ऑन दैट साइड चाड इज गॉन, आपका नाइजर इज गॉन, Tanzania is already majority Muslims. या तंजानिया गॉन, मोजाम्बिक गॉन, आपका ये पूरा ऊपर से जो नीचे पूरा ये जो अफ्रीका मैप है, दिस ओके, थैंकफुली आई हैव अफ्रीका मैप हियर, दिस अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ से पूरा ये पूरा एरिया पूरा, except the lower, the south of equator, that's the only point left. और ये वहां पर भी जल्दी से ही स्प्रेड कर रहे हैं। So next 25-30 years, maybe 50 years, this continent is gone. 20-25 years, 50 years of बहुत दूर की बात है। Coming to the next point, Darshan sir, we decided for 30 minutes, but because our emotions run high and there are so many points when we discuss a topic, we discuss in holistic way, not like bits and fragments. ये politicians के मुंह पे पैसा मार देते हैं, वो चुप हो जाते हैं। What about the reaction from the white people, the local community? It is not just कि politicians के मुंह पे, ये क्या कहते हैं उसको, वो कार्ड यूज करते हैं कि भाई हम गरीब हैं, हम क्या कहते हैं, पीस लविंग हैं हम, या हम बहुत सी चीजें वो मतलब ये कार्ड यूज करते हैं। तो इसमें अभी एक चीज और थी कि मेरे माइंड में से कभी बातें निकल जाती हैं। It's okay. इसमें एक चीज और है, आज की डेट में यूके में पुलिस वाले तो सारे आसमानी भाई लोग हैं, क्या बोलूं। अभी जब हमने लेस्टर का इंसिडेंस देखा था, why the entire thing happened, because the policemen were Pakistanis. They have infiltrated every goddamn institution of the government. जी एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज ये है कि इनके जो एडवाइजर्स हैं, ये वो पुलिस को एडवाइस करते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या विक्टिम कार्ड यूज करते हैं ये लोग, right? Yes, victim card. That we are victims. कहाँ है Darshan sir? Is it something like योगी आदित्यनाथ? Because योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा किया हुआ है। अब तो डर बैठ गया लोगों के अंदर। पहली बात, अगर आपने लड़की के साथ कुछ हार्म किया तो घर तो गया आपका, बुलडोजर चल गया, इमीडिएटली आप योर नेस्तो नाबूद। That will not happen. That will not happen in Europe. That will not happen. These people. हाँ जी. I think I wouldn't say it will not happen. I'm hopeful कि it can happen, because अभी जिस तरीके से हमने देखा आयरलैंड के अंदर, मैं वो स्क्रीन पे दोबारा डालती हूँ चीज, आयरलैंड के अंदर ही कितने हुए हैं, कितने रिबेल्स या रिवोल्ट, 97 डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं, which is not a small number, right? Yeah. Which is a big number. तो अगर इस तरीके की चीजें डेली वहां होनी शुरू होंगी तो कुछ तो इन लोगों को करना होगा, क्योंकि वोट फाइनली वो लोग भी तो देंगे ही ना। देखिए, if the government doesn't change what I have said, people will take things into their own hands, and I don't think that will be the right thing. If that happens, अभी प्रॉब्लम कहाँ आएगा, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। Somebody wanted to support the far right group here in UK and said we're going to send them some money
to support them. And I said, you are doing the wrong thing. Number one, these far right groups will not be able to differentiate कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है और ईसाई कौन है. When it comes to brown skin or black skin, for them everybody will be the same. उसमें वो किसी को भी टारगेट करेंगे तो उसमें हम भी आ जाएंगे. But I think certain lines will be set. Why have been bringing Yogi Adityanath, ma'am? Maybe your मेरे को एक चीज और अभी याद आई जो मैं भूल गया पहले. What I wanted to tell you, what these people do is when elections come, they know where their people live. They go and collect their postal voting cards from them. The groups go out and they collect those postal voting cards, and then they tick who the candidate they want. That person who is collecting this, or their organizations or their centers, collect those voting cards, put the ticks on those cards on the person that they want to vote for, and then it is just posted off to the election commission, and that's how they get elected into places here in UK. Yeah, and I think something like, जैसे यहाँ पे love jihad वाले वो आए हुए हैं, laws आए हुए हैं, I think something of that sort is still a very mild form of thing that they can do in order to save their girls. कि अगर आप identity change करके आ रहे हो, आप नाम change करके आ रहे हो, तो अगर आप धोखा दे रहे हो, तो obviously, there should be some action. The thing is somebody need to prove it. या कि कोई लड़की को ये कहना पड़ेगा कि ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है, ये लड़का ये कड़ा पहन के आया, या इसने अपना नाम फलाना सिंह या कोई भी वो नाम यूज करके मुझे इसने ये किया है. Until that happens, even that वो कह देगा okay, these white people are to this thing now. वो कह देगा हाँ ठीक है ये एक केस हुआ है. Not everybody is doing that. जैसे मैंने कहा मेरा ही दोस्त मेरे से कड़े मांग रहा था कि मेरे को कुछ कड़े चाहिए. अरे मुसलमान को कड़े क्या करने हैं? Why does he want कड़ा? Oh, I want to give them to my friends. And they are Sikhs. अरे सिख को तो पता है कड़ा कहाँ से आता है, उसको तो जरूरत ही नहीं है, वो तो कहीं भी गुरुद्वारे में जाए कड़ा ले लेगा, या कहीं से भी कड़ा मिल सकता है, चाहिए उसको. तो इन लोगों को क्यों चाहिए? सर ये वाली चीज सिख लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा हुई है, अब तो क्रिश्चियंस के साथ भी हो रही है, तो इसलिए ज्यादा आवाज उठ रही है, नहीं तो सिख लड़कियों के साथ तो दशकों से हो रहा है. गुरुद्वारों में क्या स्टोरी है? गुरुद्वारों में क्या इन चीजों को लेके? गुरुद्वारे काफी अपनी बच्चियों को इस चीज पे सावधान कर रहे हैं कि भाई इस चीज से बचो. लेकिन क्या होता है, माँ बाप लगे हुए हैं कमाई करने में, उनको पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं. ठीक है, वो बच्चे बाहर जाते हैं, उनको जैसे वो कहा आप पहले बता रहे थे कि 10 लोग लाइन में लगे हुए हैं, एक ट्राई करता है उसके साथ नहीं पटी है, दूसरा ट्राई करता है उसके साथ नहीं पटी, कहीं ना कहीं वो पट जाती है, राइट. और जब वो हो जाता है फिर वही 10 उसको इस्तेमाल करते हैं, वो 10 के भी 20 हो जाते हैं, राइट. वो सिर्फ एक शुरुआत करने की बात होती है, फंसाने की बात होती है. एंड दे डू इट. They are well trained. They're trained in their centers. They're trained in their organizations. एक पॉइंट दर्शन सर, इसमें एक पॉइंट कल हमने डिस्कस किया था और अभी हम मिस कर गए हैं, and with that we'll wind up. इसमें टैक्सी ड्राइवर्स, their painters, their plumbers, all these people play a big part in the network system, in information network system about the girls, their families, their upbringing, and things like that. जी. Taxi drivers, yes. Plumbers, ये वो, okay, थोड़ा. But majority of their people are into taxi driving, cash in hand jobs किए, yeah, and done. But the main center is the local authorities, where people जहाँ से उनको ये पूरी information दी जाती है कि फला लड़की vulnerable है, आप उसको उठा लो, आप उसके पीछे लग जाओ, और आपको उसकी पूरी, वो लड़की की पूरी इंफॉर्मेशन, उसका घर, उसके माँ बाप, उसका भाई बहन, सबकी इंफॉर्मेशन दी जाती है इन लोगों को. और इनकी कम्युनिटी वाले जो काउंसिल्स के अंदर काम करते हैं, लोकल अथॉरिटीज में काम करते हैं, वही इनको इंफॉर्मेशन देते हैं. क्यों देते हैं? देने के पीछे देखिए क्यों देते हैं, क्यों इंफॉर्मेशन पास? उनके हिसाब से हम काफिर हैं और हमें उनका हक है हमें ऐसे. सारे लोग तो इस एंगल से नहीं पास ऑन इन्फॉर्मेशन करेंगे, बिकॉज
कुछ आई थिंक मॉनेटरी फैक्टर भी होना चाहिए। मेजोरिटी करते हैं। अभी ये था ही ना कि वो उसने क्या कहते हैं मिनी कैब ऑफिस मतलब टैक्सी फर्म शुरू की और काउंसिल वाले ही उसको बता रहे थे फलानी बच्ची को तू स्कूल ले जा, राइट, और वही ये काम करता था, उसका यही काम था, राइट। पुलिस स्टेशन में जाता है तो पुलिस स्टेशन सामने से उसको मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? पुलिस स्टेशन के अंदर कोई होगा ना, पुलिस के अंदर कोई होगा ही ना जिसने इन्फॉर्मेशन दी कि देख तेरी मैसेज किया कि देख तेरी बहन हमारे पास है 11 साल की, तेरे भाई की हमने टांगे तोड़ दी थी, तो अगर तूने बयान दिए तो तू देख ले उनका क्या हाल होगा। तो दे आर इन्वॉल्व्ड इन एवरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड गवर्नमेंट को पता है और आंखें बंद करके बैठी हुई है। शेमफुल, डिस्कस्टिंग, disgraceful. There's no human rights. So जयदेव जी का कमेंट है, यूके पॉलिटिक्स इज विक्टिम ऑफ इट्स ओन पॉलिटिकल करेक्टनेस, रेजिंग अवेयरनेस इज सो क्रूशियल, दिस टॉक विल गो अ लॉन्ग वे। थैंक यू बोथ, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज डू द थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी जो दर्शन से हम लोग क्या होता है, देखिए आई अंडरस्टैंड, अभी एक हमारे व्यूअर का कमेंट आया था SNS कुमार जी का, एंड आई वुड लाइक टू पुट इट ऑन द स्क्रीन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन कि क्या रीजन है दैट आई हैव टू स्पीक एट टाइम्स। इट इज yes, this is the comment. Madam, you talk more than guest, you may lose people like me. This is not a one-sided talk. No, let me explain, sir. दर्शन सर ने कल मुझे ट्विटर स्पेस पे इनवाइट किया था एंड वी स्पोक अ लॉट देयर। हम ये जॉइंट एफर्ट है, ये ना दर्शन सर का कॉपीराइट है ना मेरा कॉपीराइट है, किसी का कॉपीराइट नहीं है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो पॉइंट्स फ्लो करते हैं, तो मुझे लगता है पॉइंट मिस ना हो जाए, पॉइंट और ऐड, राइट? सो दैट्स व्हाई आई चिप। हाँ जी सर, दिस इज अ डिस्कशन, okay, it is not just me talking. If it was just me talking, I could sit in front of a camera, मैं कैमरे के सामने बैठ के अपना YouTube बना के और उसको पेश कर देता हूँ, डाल देता हूँ। Yeah, I'm thankful, grateful to Gayatri ji who helps me. I am zero with IT. I can't do this kind of things. It's not like that. It is like we have to because जैसे सर बोल रहे हैं तो my brain is working, I'm getting the points, the ideas. जैसे अभी मैंने बोला ये information क्यों दे रहे हैं, सर ने एक पॉइंट बोला, दूसरा पॉइंट मैं बता देती हूँ यहाँ पे। हवाला का रैकेट चलता कहाँ से है? ये टैक्सी ड्राइवर्स। अभी जैसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, राइट, तो किसी ने कमेंट किया, मेरे को नाम दे दिया, ठीक है, तो इसी तरह बातचीत होती है ना। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, आप बता रहे हो, आप कुछ मिस कर रहे हो, मैं हाँ सर और मैं बात कर रहे हैं, साथ में आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, वहां से पॉइंट्स हमें निकल कर आ रहे हैं, एंड इट बिकम्स अ वेरी होलिस्टिक एंड अ लाइवली डिस्कशन। सर ने एक पॉइंट जो मिस कर दिया, जो मैंने कल ट्विटर स्पेस में भी कहा था, ये लोग एक किताब के बल पर काफिर होने की वजह से तो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर ही रहे हैं। दैट्स वन एंगल। अनदर एंगल इज they get money. The entire हवाला ट्रैफिक, दो हवाला रैकेट जो चलता है वो किसके भरोसे चलता है? टैक्सी ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिशियंस, ब्यूटी पार्लर पीपल, ये लोग करते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये क्योंकि आपके घरों में जाते हैं, आपके घरों से एसोसिएटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, सो दैट्स हाउ दे गेट होल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो, एंड दे आर बीइंग पेड हैंडसमली बाय देयर एजुकेशनल सेंटर्स कॉल्ड मदरसास एंड मस्जिद्स। आपको क्या लगता है फ्री में कोई इंफॉर्मेशन देगा? फ्री में कोई देगा? नहीं देगा। कोई भी इंफॉर्मेशन फ्री में नहीं देता। देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। सो yeah, Maya Jagannathan ji wrote bouncing of ideas when talking. Yes, the ideas bounce when we have, that's why I like it a very what do you say, an interactive session. So मैं by no means मेरे guest बहुत elite guest में हैं, and no means I plan to cut them off. It's just that I want मैं अच्छा कंटेंट दूं आप लोगों को। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी की बात काट सकूं या कुछ कर सकूं। थैंक यू जी Darshan sir, thank you. Thank you to the guy who put that suggestion. I would like to thank him for what he's saying. But please take our point on board. Okay, this is we support each other, and we bring up issues that, like, I'm forgetful. I forget names, I forget things. And if Gayatri is reminding me or telling me what it is, then I don't think there is anything wrong. I think I've spoken more than she has, so there is no They do cash in hand. देखिए random life in 3D का comment आया exactly
ये पॉइंट हम मिस Absolutely. They do just cash in hands. And they run businesses like kebab centers and restaurants where money is exchanged without any record of it. Exactly. Parallel economy is being run. Thank you so much, sir. Let's wind up with that. अगर जरूरत पड़ी तो हम इस पे दोबारा करेंगे. And I would like to bring somebody from GB News, if possible, some people who have made this documentary, because they are the ones who have actually met the victims of this entire scandal, which has been running right under the nose of the UK government, right under the nose of different political parties and different leaders. सबको पता है, कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं. किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी बच्चियों के लिए खड़ा हो. किस टाइप के पुरुष हैं ये लोग, किस टाइप के पुरुष हैं? अपनी बच्चियों के लिए अगर खड़ा नहीं हो सकते हैं तो धिक्कार है. देन इट्स बेटर यू डाई एंड दे टेक ओवर योर गर्ल्स, जैसा अभी एक बंदे ने लिखा था. इट्स बेटर दैट वे. Absolutely, Gayatri. I will say that in English to all the British politicians. It's a shame on you lot. You can't stand up for your own little girls. You disgust people. You're disgusting people. You don't deserve to be in those positions. I think you should all resign and let people who want to stand for Britain stand in politics and let them run the country. Thank you so much, Darshan sir. जाने से Thank you, Gayatri ji. Lovely. Speak again. Take care. Bye bye. सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. Yeah. Please support us through all the means possible by information, inputs, finance, वो जो भी आपके सामर्थ्य में है उसके लिए सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ईमेल है, सोशल मीडिया अकाउंट है, पेटीएम है, पेपैल है, जो भी आप जैसे भी करना चाहें, आप जो भी हेल्प करना चाहें, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहें. बिकॉज मैं रात को चाहे 2 बजे भी बैठ के मैं ईमेल्स पढ़ती हूँ, एंड आई ट्राई एंड रिस्पॉन्ड टू एवरी ईमेल दैट आई गेट होल्ड ऑफ, अनलेस एंड अनटिल इट इज I read all of them, every email I read. So in case you want to pass on anything, please feel free. And if you want to contribute, all the links are given in the description box. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. Thank you so much, sir. Har Har Mahadev. Take care.